सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं गॉस जॉर्डन मेथड, जिसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि जो जॉर्डन मेथड होता है, जो गॉस जॉर्डन मेथड है, वो क्या होता है और क्या ये कहना चाहता है। So first of all, some people may also called what called that some people called it inverse, that inverse of matrix, inverse of matrix by the elementary operation, है ना, by the matrix method, by the matrix method, okay, oblique elementary operation, oblique elementary operation. Okay, so this is same thing. So the thing is कि इसका इतने सारे नाम क्यों हैं और क्या है, तो हर एक राइटर का अपना अलग अलग कंसेप्ट है। द थिंग इज द लॉजिक बिहाइंड इट, that is a equality. The logic behind is that is a concept of, that is a concept of equivalence matrix. Okay, equivalence matrix, and equivalence matrix is represented by this terminal sign. Okay, this term is known as equivalence sign notations. So what the equivalence concept of equivalence means: suppose you have a matrix A, that is the given matrix. So let the given matrix, the A, the given matrix okay is equivalent to the identical matrix, is identical matrix, is the unit matrix, okay, of same order, of same order as given matrix. So so if we apply some elementary operation, so if we apply if we applied elementary operation okay, both side, then what happen, your A will convert, your A will convert to the identity, A will convert to I, then the equivalence of I, that I itself will convert the A inverse. So this is the concept. Okay, so what we can say,
So what we can say, so the conclusion, we conclude it that what we can say that the elementary row oblique column transformation which reduce a square matrix A to the unit matrix I. Okay, when applied to the unit matrix gives the inverse. Okay, inverse matrix A inverse. So the thing is, suppose the A is a given matrix, so the equivalence matrix will be I. If we apply the elementary operations or transformation within A and I, then A itself convert into the I, and equivalence to I itself, the I will convert to its inverse, and it will be known as that A inverse. Okay, so this is the concept. चलिए अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं, अगली क्लास में, कि इस पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए. सो अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, उसमें हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, 1 से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद.